Hello everyone. Hello. I hope आप लोग अच्छे हो and you people are good and practicing problems. Let us for now focus on this one. This is going to be one very interesting pick, I would say, because we are going to get, a lot of information out of this question. Also, it will be a good check for our electrostatics concept. So let us start with the question. Space between conductors of a spherical capacitor. You can see here, this is spherical capacitor, and this is filled with a dielectric as shown in the figure. So half of this portion is filled with dielectric. Dielectric meaning insulator, and its dielectric constant is K. So dielectric constant K is nothing but this is relative permittivity of the media. Okay, so this is epsilon R. Now, what is given in A? If a charge is given to the capacitor, let's say we are giving charge. So let's say to B we have given plus charge. So to this surface we must be giving minus Q charge. And you know that this plus Q and minus Q will be distributed on the facing surfaces. जैसे आप parallel plate capacitor पढ़ते हो ना, तो plus charge ये facing surface पे होता है, negative on this surface, right? So facing surfaces पे charges होते हैं. Now, we are asked in this case what will be the charge density at point B and at point A. So charge density क्या होगा? क्या सेम होगा, डिफरेंट होगा, तो कैसे होगा? I mean conceptually we need to explore it. So let us get at this one. Suppose कर लो हमारे पास एक sphere होता. Let us forget this diagram. Let's say we have a sphere and we are giving it charge q. आपको पता है कि स्फीयर का हर पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सेम, दैट इज रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, राइट? So if that is same, then same amount of charge density will exist at each point of it, right? डन है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर सरफेस इरेगुलर होता है मोर चार्ज डेंसिटी विल स्टे एट द पॉइंटेड एंड. पॉइंटेड एंड कहने का मतलब उसका रेडियस क्या होगा, जीरो होगा ऑलमोस्ट. सो अगर सरफेस फ्लैट है चार्ज डेंसिटी कम होगा, पॉइंटेड है ज्यादा होगा. बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने कवर किया होगा इस पोर्शन को. सो हियर सिंस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सेम एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी सेम होगा. लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये हुआ ना कि हमारे पास एक और स्फीयर है यहाँ पे, चलो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट इन दिस स्पेस देर इज डायलेक्ट्रिक. Now, how this dialectic is going to affect this charge distribution? This is what we have to understand. अब देखो इसको समझने के लिए ना हमें ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस स्पेस में और इस स्पेस में सेम है या डिफरेंट. अगर सेम होगा तो क्या होगा? जैसे देखो, if I talk about calculation of electric field at a point just outside of this A or at a point just outside of this B. So let's say just outside means एकदम closer to the surface I'm talking about. So here also closer to the surface in this media I'm talking about. ठीक है? So तुमने एक चीज पढ़ा होगा, seat पढ़ा है ना, infinite seat पढ़ा होगा, and upon this if this seat is conducting and if it has a charge, then electric field at any distance will be equal to sigma by epsilon naught. That you must have studied, right? And this formula we can use if surface is spherical also, but not for any point. I would say कि suppose करो तुम यहाँ से चलना start किए. Keep on walking towards the surface. Keep on walking. तुम जब दूर हो ना, you will be properly able to see the curvature, right? But the moment you are coming closer, and if you are here, you won't be able to see the curvature. You will only see this as a flat portion, right? So कहने का मतलब ये है कि इस कर्वेचर, ये स्फीयर के जस्ट अबव कोई भी पॉइंट ले लो, जस्ट अबव वाला जो पॉइंट होगा उसके लिए ये स्मॉल सरफेस विल लुक लाइक अ फ्लैट सरफेस लाइक दिस, like a seed. Done it? So just above it, we can write electric field as sigma by epsilon. ठीक है? सो इससे हमारा ना क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा. सो लेट अस गो दिस वे. अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगी. लेट्स से हियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए. सो just above this point A into this dielectric media, electric field, let's say that I'm taking as E1. So here I'm taking electric field as E1, and this will be equal to sigma A by epsilon. डन है. एप्सिलॉन नॉट कब यूज करते? व्हेन दिस पॉइंट इज इन वैक्यूम, राइट? दिस पॉइंट जस्ट अबव पॉइंट ए इज इन डायलेक्ट्रिक मीडिया, आई मीन इज इन मीडिया व्हिच डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के. सो इवन को आप क्या लिखोगे? सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन परमिटिविटी, राइट? एंड फॉर point, I mean if you calculate electric field over here just above B, then here we can write it like sigma B by epsilon naught because this is vacuum here. ठीक है? सो E2 को आप लिख लो सिग्मा बी बाई एप्सिलॉन नॉट.
डन है। अब इन दोनों को हमें हमें क्या नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि E1 E2 का रिलेशन क्या है। अगर इक्वल होगा तो इक्वेट करके वी कैन ईजिली गेट द आंसर सिग्मा ए और सिग्मा बी का रेशियो, राइट? इफ दे आर नॉट इक्वल, अगेन वी नीड देयर रिलेशन। डन है, सो वी नीड टू एक्सप्लोर दैट नाउ। चलो देखते हैं। सबसे पहले आप ये सोचो, इफ यू आर गिवन अ स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है? इस पे चार्ज दिया आपने, इवन इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट डजंट affect the potential at any point because this is a conductor, potential at each point will be constant, ठीक है? So on this surface potential at each point is going to be constant no matter what is the charge distribution for this inner sphere, okay? सो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, डन है। एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन आउटवर्ड बिकॉज इट इज गिवन पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर। हमने दिया है उसको पॉजिटिव चार्ज, सो आउटवर्ड होगा। एंड इफ यू वांट टू ड्रॉ अनदर, आई मीन equipotential surface, you will draw another sphere, right? So this another sphere will cut through this dielectric media, okay? So whatever potential is here will be potential here, डन है। अब आप एक काम करो, यहां से पास करता हुआ इससे, आई मीन इसी के रेडियस के बराबर ऑलमोस्ट, ठीक है? एक और आप ले लो, क्या दिस इज अनदर, व्हाट इज दैट, क्या बुलाते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है? दूसरा लिया हमने, और इनके बीच का सेपरेशन क्या है, लेट्स से दैट इज dr. So basically these two equipotential surfaces are having almost equal radii, done है। Let's say this surface has a potential of v1 and this surface has a potential of v2. In the direction of electric field, potential decreases the maximum. So obviously V2 is less than V1. That we don't need to argue about. और यहाँ पे जरूरत भी नहीं है. But let's talk about potential difference between these two equipotential surfaces, dV. That you will be writing magnitude wise V1 minus V2. Magnitude wise it will be this one. So mod मैंने लिखा है. And if this distance is dr, in this dr space, we can say that electric field is almost constant because we have taken these two concentric sphere of almost equal radii. So we can say electric field is almost constant in this space. Done है? And if that is the case, इस पॉइंट के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, ठीक है? बी से जस्ट अबव के पॉइंट के लिए अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो ना, देन इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू विल बी हाउ मच, आई मीन ई डॉट डी एल माइनस, वैसे तो प्रॉपरली लिखोगे तो माइनस ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डीवी, ठीक है? सो here if you write it, I mean minus e dl electric field dot dl cos 180, so that will become plus over here, anyway dv, and e is equal to how much, dv by dr, ठीक है? Let us focus on the magnitude. So electric field का magnitude क्या होगा, dv by dr, right? डन है। सो दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे बी के जस्ट अबव, if we have taken this equipotential surfaces, two such equipotential surfaces just above point B, then we can say that here electric field is equal to dV by dr. And here also, if just above A we talk about, then this dV is what? dV is same as here, right? Because these are equipotential surfaces. So dV is same. And this is also dr. So here also electric field is same. Done it? So this is a very interesting result, and that is in this space, whatever is the value of electric field will be the value of electric field in this space. Done है? For any position of a point which is at a distance of r from the center. So यहाँ से अगर r distance पे आप बात करो तो r distance पे if you are taking point here or you are taking point here, electric field will be same. Obviously if you choose different point, different I mean point at a different distance from the center, electric field will change. But suppose कर लो यहाँ पे तुमने निकाला और तुमने यहाँ पे निकाला, if these two are at the same distance r1 and r1, then electric field at these 2 points will be same. So electric field का status कुछ ऐसा है, and if that is the case, you can clearly say here what you can say that sigma a by epsilon is equal to sigma b by epsilon naught, डन है? और यहाँ से आप इसको लिख डालो, क्या लिखोगे बताओ? सिग्मा ए कैन बी इज इक्वल टू एप्सिलन को आप क्या लिखते हो? एप्सिलन इज एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर। एप्सिलन आर इज व्हाट? के, राइट? सो एप्सिलन नॉट के इज इक्वल टू सिग्मा बी एप्सिलन नॉट. So we have got the answer, sigma a by sigma b is equal to what? K. ठीक है?
This is going to be the answer. If you want to, I mean, analyze this question more, तो मैं तुम लोगों को एक hint देती हूँ. जैसे देखो, I mean, we should appreciate this question. This is a good one. So तुम लोग सोच रहे होगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम कैसे हुआ? सेम तो हुआ है. जस्ट बाय द ज्योमेट्री वी कैन से इट विल बी सेम, क्योंकि यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसे प्रोग्रेस करेगा इन द आउटवर्ड सेंस लाइक दैट. देन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दिस, एंड according to that, I mean, electric field has to be uniform in this space. Uniform meaning, I'm not saying at every point electric field is constant. For same radial position, electric field is same, no matter it is in dielectric or it is in the vacuum. That is the result, right? So ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अफेक्ट हो रहा है, दैट आई विल टॉक यू थ्रू. सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्यू चार्ज था, ठीक है, एंड नाउ देर इज अ डायलेक्टिक इन दिस स्पेस. Done it. And still we are saying whatever is the electric field is in this region, is the electric field is in this region for same position of this point from the center, right? So ऐसा same है. अब ये same होने के लिए what should be the condition? You just see here, since there is a dialectic in this space, because of dialectic there will be charge induction. जैसे आप suppose कर लो पहले Q charge था, done है, and because of, sorry, q charge was on the surface, so because of this q charge on the surface there was electric field, right? So electric field was there, and this electric field was radially outward in this direction. Sorry, this direction is not going to be correct, in the radially outward direction, okay? And because of this radial direction, if you are keeping dielectric here, what will happen? Free charges of the dielectric, whatever charge is mobile, on that this electric field will apply force. So negative of free charges present in the dielectric will start accumulating near this sphere, right? Then and positive charge will start accumulating over here. Why? Because electric field is in outward sense. On negative charge, electric force acts in the direction opposite to the electric field. So negative charge opposite to the electric field will start accumulating near the surface of inner sphere. Okay? So this will happen, and because of this charge separation, what will happen? New electric field is getting generated in this direction, and which is, I mean, opposite to the direction of initial electric field. So in this region overall electric field is decreasing, and as we have seen electric field जो यहाँ पे है वही यहाँ है. It means what? It means this q charge distribution has to change, क्योंकि अगर change नहीं होगा तो यहाँ पे electric field will be greater than that of this one. But we have seen it is equal, right? And for that equal thing, charge has to get distributed, है ना? क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है. सो टू कॉम्पेंसेट फॉर दैट व्हाट विल हैपन? चार्जेस फ्रॉम हियर, पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम दिस हाफ पोर्शन, सम ऑफ दैट will travel to this region. So positive charge density on the inner sphere on this side will increase. ऐसे भी आप देखो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिला है, सिग्मा A is K times sigma B. So that is basically greater. Done है? So this greater is because in order to make electric field same in this space and this space, you need more charge over here. ठीक है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलकर ओवरऑल घट रहा है, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि देखो दिस चार्ज एंड दिस चार्ज विल नॉट मिक्स. ऑलवेज रिमेंबर, डायलेक्टिक क्या होता है? डायलेक्टिक होता है इंसुलेटर, एंड दिस नेगेटिव चार्ज लेयर इज ऑन द surface ऑफ डायलेक्टिक, ठीक है? सो दिस इज इंसुलेटर, दिस इज कंडक्टर. There won't be charge flow from insulator to conductor. So this negative and this positive in no way can get neutralized to any extent. Okay? So this is not going to happen. Done it? So this accumulation of negative charge near inner sphere around point A will give rise to new electric field, and because of that electric field in this region will have tendency to drop, but we have to maintain electric field same in this region and this region. For that purpose some of the charge from here will travel to this region. So you will say that in a sphere, here the charge will be sparse, I mean less dense, and here the charge will be more dense. Okay? So this is going to be your result. And यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ था, free charge and bound charge. I mean free charge it is talking about, then there is another term also, bound charge. So free charge is the charge that you supply from the outside. So यहाँ पे
इनर स्फीयर को जो हमने चार्ज दिया था, वी आर गिविंग इट फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज फ्री चार्ज. एंड बाउंड चार्ज इज व्हाट? द वन विच वाज गेटिंग इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ डायलेक्ट्रिक. ठीक है, सो वो डायलेक्ट्रिक के अंदर की चीज है. दिस इज बाउंड चार्ज. यू कैन नॉट टेक इट आउट, इट इज बाउंड. ठीक है, सो फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज का कॉन्सेप्ट वो है. चलो अब सेकंड की तरफ बढ़ते. राइट द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस विथ डायलेक्ट्रिक एंड विदाउट डायलेक्ट्रिक. नाउ द क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट. अब सपोज कर लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ था कैपेसिटर. सो यू नो दैट इट्स कैपेसिटेंस, लेट्स से दिस सिस्टम हैज अ capacitance equal to how much? Let's say it has a capacitance equal to C naught. Now, if you are dividing it into two parts, half part will have capacitance of C naught by 2, another half will have capacitance of C naught by 2. है ना, because capacity has to do with how much charge it will store. If you are dividing into half, it means half, I mean it will have now half the capacity. डन है. So अगर मैं half portion की बात करूं तो capacitance this one will be and this one will be, right, if whole this system has a capacitance of C naught. Now the question is, थर्ड पोर्शन में हमसे, सेकंड पोर्शन में वी आर गेटिंग आस्क्ड दैट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस विथ डायलेक्ट्रिक एंड विदाउट डायलेक्ट्रिक. सो विदाउट डायलेक्ट्रिक आई एम टेलिंग, लेट्स टेक इट्स कैपेसिटेंस इक्वल टू सी नॉट. सो विथ डायलेक्ट्रिक क्या होगा? सो हाफ पोर्शन का सी नॉट बाई टू, सी नॉट बाई टू, सो दिस विल बिकम के सी नॉट बाई टू एंड दिस विल बिकम के सी नॉट बाई टू. Sorry, not K, because here there is vacuum. Sorry. This is your C naught by 2. Done. Now these two capacitors will be in series or parallel. आप देख लो, this is equipotential surface. This is equipotential surface. Done. So if you talk about this half capacitor, whatever is the voltage of this one is the voltage of this one. Potential difference same. Whatever is the voltage of this one, it is V1, and this is also V1. V2, sorry. So potential difference between these two capacitors is same. So they are in parallel, okay? Or parallel में how we add capacitors like in series. So it will be K C naught by 2 plus C naught by 2. So this will be K plus 1 C naught by 2. Now take the ratio. Ratio किसका लेना है हमें? With dialectic and without dialectic. So with dialectic it is K plus 1 C naught by 2. Without dialectic it is C naught. We have taken. So this is this and this will become K plus 1 by 2. डन है. सी नॉट का वैल्यू अगर यहाँ पे तुम जानना चाहो तो ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी divided by b minus a. So this is the value. You can derive it also, and you should actually, in order to understand the system more properly. So I hope I'm able to make you understand what were the concepts over here, and I hope things are clear from your end also. But if you got stuck at any point anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.